Assalamu alaikum. Topic for today's lecture is about taxation, and we are studying income tax basics in this course. Actually, Pakistani source income. One can have Pakistan source income and can have foreign source income. Pakistan source income means somebody is getting salary in Pakistan, is doing business in Pakistan, so that would be called as Pakistani source income. Even some of the government employees who are working as an ambassadors in other countries. For example, one is the ambassador of Pakistan in the country of you can say Poland, यूरोपियन कंट्री पोलैंड में अगर कोई पाकिस्तानी ऑफिसर वहाँ जॉब कर रहा है तो वो ही इज लिविंग देयर इन पोलैंड इन यूरोप बट ही इज रिसीविंग सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो उसको उसके लिए भी वी से पाकिस्तानी सोर्स इनकम अगर किसी की पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है तो दैट वुड बी कॉल्ड एज फॉरेन सोर्स इनकम any business, any salary, any dividend received, any profit on debt, any royalty, that is called Pakistan source income. Because tax का जो portal है, it has different tabs, different divisions for Pakistani source income and foreign source income. Then the word here is kaibor. Kaibor is the word that many students who are studying business degrees, they know this concept of kaibor, this word of kaibor. Kaibor means Karachi interbank offer rate. This is the rate that the word here is interbank. Interbank means between banks. For example, HBL needs loan and it is getting loan from MCB bank. So what rate they will do transactions that will they will take on they will do it on Kybor. For example, you withdraw money from the UBL ATM and you have a card of National Bank. You have taken money from the UBL ATM, but your account is in National Bank of Pakistan. So back end pay, one will be receivables and one will be payables. दोनों का आपस में ट्रांजेक्शन या लेन देन होगा तो वो किस रेट पे आपस में क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे एक दूसरे को वो करेंगे चार्ज काइबॉर कराची इंटरबैंक ऑफर रेट every student who is doing business degree he or she should know what is kaibor. This is a very core and principal concept of accounting and finance especially in Pakistan. काइबर व्हाट इज अगर मैं कहूँ व्हाट इज टुडेज काइबर इन पाकिस्तान काइबर हमेशा इसका आंसर होगा एवरी टाइम इट वुड बी इन परसेंटेज if you search on Google and you search on the website of the State Bank of Pakistan or you write on Google 1 year kaibor today 19th September 2025 what is the one year kaibor today so that will give you an answer कि आज का जो काइबर का रेट है वो that is around 10.7%. ये काइबर how it is settled, it is based on the rate that is provided, that is set by State Bank of Pakistan, SBP, and that is called policy rate in any country. तो इस वक्त जो हमारा पॉलिसी रेट है दिस दैट इज अराउंड 11%, दैट इज एग्जैक्टली 11%. 11% है इस वक्त स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट और आज से अराउंड 1.5 years अगो आज से 1.5 साल पहले it was 22%, the policy rate by State Bank of Pakistan. And in the last quarters of 2016, I remember at that time this rate was 5.75%. 22 था इस एक वक्त था ये 5.75% भी था. Many businessmen in Pakistan they urge or they request government and State Bank of Pakistan repeatedly that this rate of 11% should be reduced. When Kybor is reduced in Pakistan, many people like you, they will expand their business. They will get car financing. They will get house financing. The economy will get a boom. तो जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है इकोनॉमी ग्रो करती है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो इकोनॉमी कंट्रैक्ट होती है और रिसेशन की तरफ जाती है. अभी लास्ट 2 days before State Bank of Pakistan has a meeting that is called MPC meeting, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं उसको. हर 2 महीने बाद पाकिस्तान में इसकी मीटिंग होती है और वो डिसाइड करते हैं क्या रेट होना चाहिए. हमारे पूरे मुल्क की सारी बैंकिंग
उसका रेट, उस इंटरेस्ट रेट उस पर डिपेंड करता है. इवन यू हैव सम सेविंग्स, लेट्स सपोज यू हैव अ सेविंग्स ऑफ 10 million, 1 करोड़ रुपए है. 1 करोड़ आप किसी बैंक में 1 साल के लिए फिक्स करवा दें, लाइक 10 million, you have to deposit it for 1 year in a bank. So do you know what profit or what interest or what markup you will get on that 1 crore per year? आजकल के जो आज के रेट के मुताबिक, आज अगर आप बैंक में 1 करोड़ फिक्स करा दें फॉर 1 ईयर, तो बैंक विल गिव यू अराउंड 10 to 11% पर ईयर. 1 करोड़ के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 11 लाख. 1 करोड़ हो तो साल का 11 लाख आपको बगैर कुछ किए इंटरेस्ट फ्री, रिस्क फ्री रिटर्न मिल जाएगा आजकल की सिचुएशन में. तो इमेजिन व्हेन द रेट वाज 22%, तो हाउ मच गुड रिटर्न वाज दैट ऑन बैंकिंग डिपॉजिट्स. 1 करोड़ बैंक में रखवाया, उसका आराम से 1 साल का 22 लाख रुपए आ गया, विदाउट डूइंग एनीथिंग एंड विदाउट टेकिंग एनी रिस्क. अभी जो रेट है 11% है, और काइबर इज अराउंड 11%. काइबर स्टेट बैंक के रेट के अराउंड होता है, समवट बिलो और समवट हायर. अभी बिजनेसमैन एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ये रेट कम हो जाएगा, इट वुड गो फ्रॉम 11% टू 10 और 9, लेकिन गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने क्यों रिड्यूस नहीं किया? जस्ट या वन ऑफ द रीजन वाज दीज रीसेंट फ्लड्स इन पाकिस्तान. वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्लड्स आए हैं तो फ्लड्स के बाद वी विल हैविंग अ वेव ऑफ फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि बहुत सारी क्रॉप्स ज़ाया हो गई हैं, राइस क्रॉप्स, शुगर केन क्रॉप्स स्पेशली. तो उनके ज़ाया होने से वो उनकी सप्लाई कम हो गई है, तो देयर प्राइसेस विल गो अप. तो महंगाई आने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं. उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट हमेशा हाई करते हैं. यू हैव स्टडीड इट इन बेसिक इकोनॉमिक्स कोर्सेज, हाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड द इंटरेस्ट रेट दैट इज डिटरमिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक. लेकिन अभी फ्यू डेज कल शायद मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में कि अमेरिका में दे हैव लोवर्ड द इंटरेस्ट रेट. अमेरिका में ये रेट कितना है? अमेरिका में दिस रेट आजकल जो है वो 3 to 4% के अराउंड है. We have now 11% these days in Pakistan. This is the Kaiber, it is always in percentage. Non-profit organization. Non-profit organization means, as the word shows, that this organization is not being run for profit motive. Income या profit के लिए नहीं चल रही होगी. Like Shaukat Khanam in Pakistan, Al Khidmat Foundation, different, or even the business school University Lumps in Lahore, that is non-profit organization. You will be amazed or surprised that they are charging very high fee and this is non-profit organization. Many students ask this question, but that is NPO. They have expenses even in that way. Even if they have some income, so that income will be used for making new buildings there. Nobody can withdraw income from those organizations. That is non-profit organization. इसी तरह से और अभी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं दैट आर आल्सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. और हाँ, ये समटाइम्स some trusts or some businessmen, they make some NPO, non-profit organization, and they can give some charity to those organizations. Many popular businessmen have their different trusts for welfare activities. उसकी वजह से they get some advantage for taxation purpose. And secondly, बहुत सारे non-profit organization में there is no bar on giving salaries. For example, Mr. Zuhaib has a idea और इन्होंने NPO रजिस्टर्ड करवा लिया FPR के साथ. Now he cannot take the profit, but he can take the salary of 20 lakh rupees per month from that organization. FBR has to tax the income, but there is no income for department, but he can get 20 lakh rupees. So sometimes people do in this way, they manipulate, they will not take the income from that, but they can get the salary. Their relatives, their close relatives are directors, CFOs, CEOs, and they can get the salary. But the point here is, it is not easy to get an NPO from FPR. You have to comply, you have to complete list of documents. And when you are NPO, every year you have to renew and you have to submit some important documents to FPR.
ये नहीं कि anybody can say we are NPO. तो NPO की कुछ requirements हैं and that should be fulfilled by those organizations. Then comes the concept of person. Person means tax में the taxpayer. The person for income tax can be individual, can be company, and can be AOP. Like if somebody is doing job, he is an individual. Okay. Similarly, company is also a person. Company will also pay income tax. AOP, AOP is generally, for your understanding, I will make it easy for you. AOP means kind of partnership firm. AOP means partnership firm. As company is registered with SCCP in Pakistan, Securities and Exchange Commission of Pakistan. और AOP कहाँ पर रजिस्टर होगी? AOP इज रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के नाम से. इट्स ऑफिस नियर चबुर्जी ऑन मुल्तान रोड. AOP रजिस्टर्ड होगी रजिस्ट्रार कंपनीज के पास और कंपनी रजिस्टर्ड होगी SECP के साथ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. मतलब पर्सन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि ओनली इंडिविजुअल. इनकम टैक्स लॉ में, टैक्स की जुबान में, पर्सन कैन बी एनी ऑफ दिस अमंग दीज थ्री, इंडिविजुअल, कंपनी और AOP. प्रिंसिपल ऑफिसर का मतलब ये है कि इन अ कंपनी CEO, CFO, डायरेक्टर फाइनेंस, प्रिंसिपल, those all officers will be treated as principal officer and they can do correspondence with FBR. So we are just abhi studying some basic concepts. I'm trying to get you familiarized with different concepts of taxation. प्रिंसिपल ऑफिसर से वो सारे लोग मुराद हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे FBR के साथ टैक्स के मामले में. इट कैन बी CFO, CEO, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, vice manager, deputy manager, like that. Profit on debt. This is very important because many people have income under this head also. Profit on debt का मतलब ये है कि when you have an income on some savings in a bank. बैंक से जो इनकम है ना, मतलब ये इंटरेस्ट की जो इनकम है वो इसमें फॉल करेगी. ये नेशनल सेविंग स्कीम से अगर आप नाम सुनाओ, कौमी बचत स्कीम, बहुत सारे लोग उसमें पैसे रखवाते हैं. दे गेट मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट. So that income is profit on debt. REIT, REIT. In stock market, Pakistani Stock Exchange, we have around 600 companies of different sectors. Some are cement sector, pharmaceutical sector, dairy sector, packaging sector, steel sector, automobile sector, different sector. Glass sector, Sunny Glass, Chirag Cement, Nestle, Fauji Foods, Unity Foods, packages, Abbott Laboratories, Miller Tractors, different companies. For the last, from the last few many years, you can say like 5 to 10 years, there are some REITs launched in Pakistan. REITs ये है, REITs are also listed on stock exchange in Pakistan, and around at this time I think only 2 REITs are listed on Pakistani stock market. Internationally, globally, developed world में there are more REITs. REITs क्या होता है? REITs वो companies हैं जो only business करेंगे real estate का. REIT means Real Estate Investment Trust. Real Estate Investment Trust. I think you have visited one plaza near DHC. अगर किसी को गया हो, डॉलमेन मॉल सुना है नाम? डॉलमेन मॉल. डॉलमेन मॉल, अब ये आपके असाइनमेंट, you have to search on the internet कि who the Dolmen Mall is owned by which company. So that is also owned by Dolmen REITs. Dolmen वालों का एक REITs भी है, and that REIT owns that plaza Dolmen Mall in Lahore. REITs वाले ये करते हैं, they have different plazas, buildings in many big cities, and they get the huge rent from that, and rent is divided among the shareholders. Like you can make investment in the REIT. Like let's suppose you have 5 lakh rupees, 5 लाख रुपए आप उसके REIT के शेयर्स ले लें, तो जो भी किराया आएगा उनकी सारी बिल्डिंग्स है उसमें जो आपका शेयर बनेगा, यू विल ऑल्सो गेट दैट शेयर इन द फॉर्म ऑफ रेंटल इनकम कह लेंगे, डिविडेंड कह लेंगे. लेकिन REITs आर स्पेशली फोकस टू रियल एस्टेट.
बिजनेस। तो ये है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने दे हैव अनाउंस्ड अ पैकेज फॉर डेवलपर्स के लिए भी एक आया था एमनेस्टी पैकेज। मतलब समटाइम्स गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सम थिंग्स फॉर सम स्पेसिफिक सेक्टर्स, लेकिन पिछले काफ़ी सालों से अगर आपको याद हो, गवर्नमेंट हैज़ गिवन टैक्स कंसेशंस और टैक्स वेवर्स टू सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, ताकि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर आए। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, आईटी एक्सपोर्ट्स पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी रियायत दी थी टैक्सेशन में। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेजिडेंट। रेजिडेंट डजंट मीन के वन हु इज लिविंग इन द हॉस्टल और इन द हाउस। रेजिडेंट मीन्स इंडिविजुअल। रेजिडेंट इंडिविजुअल वो होगा that is living in the jurisdiction or boundary of Pakistan for 183 days or more. How many years we have in a year? How many days we have in a year? 365. अगर कोई एक साल में 183 डेज या इससे ज्यादा पाकिस्तान में रहेगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज रेजिडेंट फॉर दैट टैक्स ईयर। क्योंकि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की टैक्स ट्रीटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। दैट इज वाई इट इज कंपल्सरी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन resident and non-resident. Moreover, those employees of government of Pakistan or provincial government who are working outside Pakistan, जैसे मैंने भी example दी, if somebody is a ambassador and he is working in Poland in Europe for the last 3 years, पाकिस्तान में तो नहीं है, but he is getting salary from government of Pakistan, तो उसको भी हम resident कहेंगे। Okay, AOP, AOP means that company, that firm जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पाकिस्तान में, उसका अगर मैनेजमेंट का कोई ऑफिस वो इसमें कुछ चीज़ पाकिस्तान में है, तो दैट मीन्स दैट एओपी इज रेजिडेंट फॉर इनकम टैक्स लॉ। कंपनी, इफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी बनी पाकिस्तान में है, बाद में कहीं और मूव कर गया उसका ऑफिस, तो फिर भी वो रेजिडेंट कहलाएगी। बट एंड इफ और दिस इज और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज इन पाकिस्तान। अगर कोई कंपनी है वो बनी तो बाहर है, इनकॉर्पोरेशन किसी और मुल्क में हुई है, लेकिन पाकिस्तान में भी उनका ऑफिस है, कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, so that would be called resident company. Nestle, Pakistan में Nestle is a company, I think from Finland or some European country, but it is Nestle पाकिस्तान का शेयर भी listed है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, and Nestle have a control and management फैक्ट्री सारा कुछ, तो हम उसे कह सकते हैं रेजिडेंट कंपनी है। उसके अलावा जो नहीं होगी वो नॉन रेजिडेंट में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ देयर इज सम चैलेंजिंग issue for tax departments across the globe. I have met a person who came from Australia and have some lecture series, and he was doing research on those companies जो work and making their, those companies are making profits from different number of countries, but not, they are not giving a single penny of tax there. For example, in Pakistan, Facebook, Google, Twitter, they are making profits from this public as well. We have a 25 crore population. People are using TikTok and Facebook and different companies like that. But those companies, see, they are not giving any tax to government of Pakistan. Facebook don't have any office in Pakistan. Facebook has no, you can say, control or management in Pakistan. So how we can tax them? So this is a challenge for many countries कि इन कंपनीज को किस तरह से टारगेट किया जाए फॉर टैक्सेशन पर्पस। वो रेजिडेंट तो नहीं है क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है, बट दे आर मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम पीपल हेयर। So this is the concept of resident and non-resident. So these are some important topics about tax and especially income tax. You can also read it from the book, textbook, and you can also read from the Bear Act that you can download. As I mentioned in the previous classes, you can download actual income tax ordinance 2001, recent one as amended from the website of FPR. I have asked you previously, and I'm again giving you this instruction
you need to and you should download. Go to the Google and write download income tax ordinance 2001. It will take you to the website and download that PDF file. It would be around 700 800 pages, and you can cover this all course of income tax from that PDF book also. But when you have a actual text of law, exact जो form है, it is sometimes difficult for you to understand. So that is we have books that make something easy for you, chapter wise and questions and numericals, and language is being made easy. जो कि लॉ की एक्चुअल लैंग्वेज होती है ना, वो थोड़ी सी ड्राई और मुश्किल होती है. बट यू शुड ट्राई एंड यू शुड डाउनलोड दैट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फ्रॉम द वेबसाइट. So this is all for today's topic. Thank you.